means of communication. How do we communicate with each other? हम एक दूसरे से बात कैसे करते हैं? If you are sitting at one place, you can talk to each other. आप एक दूसरे से बात करते हो. But if someone lives on distance, far away from you, जो कभी कोई आपसे दूर रहते हैं या आपसे distance पे रहते हैं, then with those peoples, how do we communicate? उन लोगों के साथ हम कैसे बात करते हैं? We use letters, telephone, radio, television, mobile, newspaper or fax machine to communicate with the people who are far away from us. So children, first of all, we will know about letters, the first way of communication. So in this you will learn journey of a letter. What is the journey of a letter? How a letter travels and reach to us. First we write a letter. After writing, we drop letters into a post box. You can see in this picture, this is the post box. A postman collects them and takes them into the post office. Postman comes and collect all the letters and take all the letters in the post office. Then what happened in the post office? At the post office, letters are sorted according to the different places to which they need to be delivered. Letter को अलग अलग कर दिया जाता है. Means at which place these letters will be delivered. Like some letter, everyone writes letter to their natives, relatives. अपने relatives के लिए letters write करते हैं. Then अब आपने letter write किया है, आपके relatives रहते हैं पानीपत में. If I write a letter, my relative lives in Sonipat. If other writes the letter and maybe their relative lives in Bangalore or Calcutta, in different cities, so different letter of different cities are sorted here. यहाँ पर अलग अलग cities के letter को sort किया जाता है, यानी उनको छांटा जाता है. हर city के letters को एक place पे रखा जाता है. The sorted letters are sent to other places by bus, train और airplane. जो letters sort किए हैं हमने, उन sorted letters को या तो फिर by airplane, अगर हमने letter foreign भेजना है तो by airplane जा सकते हैं वो, और local letters are sent by bus or car. So these letters or train, by using these transports, the letters are sent to other places. As the letters reach the post office in the other city, जब letter दूसरी city के post office में पहुँचते हैं, they are again sorted. फिर से उनको sorted किया जाता है, यानी उनकी छटनी की जाती है. And you can see in this picture there are many racks. If we talk about Karnal, there are many sectors, colonies in Karnal. So letters related to every sector or colonies sorted here and put in a rack. If auntie is putting letters in this rack, maybe these letters are of sector 14. सो जो सेक्टर 14 के लेटर हैं वो इस रैक में रखे गए हैं, सेक्टर 12 के इसमें, सेक्टर 7 इसमें. सो अगेन इनको सेक्टर्स, कॉलोनीज, एरिया के अकॉर्डिंग सॉर्ट किया जाता है, छाटा जाता है. द पोस्टमैन डिलीवर्स दीज लेटर्स टू द एड्रेस रिटन ऑन देम. जो उस लेटर पे एड्रेस लिखा होता है, फिर जो पोस्टमैन है वो उस एरिया में जाकर वो लेटर को डिलीवर करते हैं. एंड दिस इज़ हाउ वी गेट आवर लेटर्स.